one of the things I found very difficult to crack is the Indian market. And looking at so many businesses which were successful elsewhere, but India में आके वो हो गया. So it's a very tricky situation here. But question I would say is that see ultimately we'll initially after grants will be depending on the investors, angel investors, and then the actual investors. So that is where it comes out that you have to have a very viable business plan. So how do we know what the investors want? And like how do we track in general what are the fields in which investors are openly supportive of and वो लोग आसानी से invest कर लेते हैं? I mean I know it sounds like a cheat code, but I don't think there is a cheat code in this. But what do you think investors are looking for? किस तरह का business model is what investors are looking for? See, there is a cheat code actually. And it's a very simple thing. So simple that it might make us feel slightly silly and stupid. There are only two aspects of any form of investment: value creation and wealth creation. Right? If whatever you're doing is creating value, चार लोगों के अगर वो काम नहीं आ रही, so it's not going to create value and it's not going to be successful. As simple as that. Second, wealth creation. Wealth creation for all the stakeholders, right? So at the end of the day, if you do a sum of these value creation and wealth creation, you will get a total जिसमें सारे stakeholders, investors, founders, customers, your partners, vendors, everybody makes more than whatever they had, right? सबको फायदा हो रहा. अगर वो इक्वेशन में कोई भी एक ऐसी पार्टी है जिसको फायदा नहीं हो रहा, then it's not going to work out. And if it's not going to work out, you should not even touch it, right? And this is the basic tenet of Islam, right? So whatever you do, it has to benefit the mankind. Yes or no? Right? So ये सबसे easy way है to validate any idea. जब भी आपके दिमाग में कोई idea है, and usually I get this a lot of times, right? My Instagram is usually full of these questions. I have this idea, can you validate it for me? Right? So the most important question that you need to ask yourself is आपके आइडिया से किसको और कितना फायदा हो रहा. और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, and you cannot cheat yourself with this question. Can we cheat ourselves with this question? We cannot, right? If you know okay, whatever you are building, whatever you're creating, whatever you're making, whatever you're doing is going to help person A to solve problem X, that's it. That's your business model. End of the story. Right? अब ये केस में 99% of the times you don't need money. ये जो whole investment raise करने का जो पागलपन है, ये मीडिया के जरिए क्रिएट किया गया हाइप है, right? We should stop celebrating fundraising. Raising funds is really important, but a very later stage. Series A, Series B के stage में, when you have already achieved product market fitness, when you have a certain aspect of market set for yourself, reserved for yourself, taken care by you for yourself, that's when you think about scaling up. जब जाके investors आपके पास आते. This is exactly how things have always been historically, right? And the funny aspect here is जितने भी बड़े super successful businessmen का हम लोग example लेते, nobody raised funding. Nobody needed to raise funds. Right? And even if they needed to raise funds, they did not have to knock on the doors to convince people to give them money, because they did the right thing. They focused on the problem, they focused on the market and the audience, and they delivered it regardless of how difficult it was. They did the right thing. This should be the outcome of this talk. You have to continue to do the right thing, be beneficial. Whatever you're doing has to benefit the mankind, and nobody can stop you. There is no power in the world that can actually stop you, and wealth is a byproduct of you doing the right things at the right time for the right people. So just one point I want to elaborate or extend his point. उसको अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बोलेंगे तो आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करिए. It's nothing but you are benefiting the people, right? For example, अभी India is the best market to do experiments unorganized तरीके से, because
most of the economy of India is, again, it is dependent on unorganized sector. मैं सऊदी में था, दुबई में देखा, मतलब मल्टीपल जगह, आपको जब तक ह्यूज पैसा नहीं होगा आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. बट इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट. आप छोटे लेवल से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक छोटा एग्जांपल, अभी आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे समाज में, बहुत नफील इबादत है, लेकिन लोग बहुत खुशी खुशी से जौक दर जौक उधर जा रहे हैं उम्रा के लिए, राइट. आप मना करेंगे तो आपको गलत बोलेंगे, अच्छे काम के लिए जा रहे तो आप रोक रहे हैं, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी आप कैसे निकालेंगे, राइट. लोग उसको, उस टूरिज्म इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं. 15 दिन के लिए लेके जाएंगे, वो टूर गाइड जो रहेगा 1 दिन मक्का में आपके साथ, 1 दिन मदीना में रहेगा, फिर उसके बाद 13 दिन जो है आप पूरा वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, फलां करेंगे, उम्रा के नाम पे सब जाके वहाँ पे क्या हो रहा है, जो गए हैं वो अच्छे से उसको समझ सकते हैं. तो आप इसको क्या करिए, थोड़ा और यूनिक तरीके से इसको पेश कर सकते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरा स्ट्रगल रहा, वो यही 2 मुकामात पे मेजर जो स्ट्रगल था, मक्का और मदीना. 13 to 15 डेज वाला अगर आप पैकेज लेके जा रहे हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट, सीरा आप सिखा सकते हैं उसमें. डे टू डे आप बताएंगे, हिस्टोरिक प्लेसेस पे लेके जाएंगे, उनको वहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे एंगेज करेंगे. उसमें 2 फ़ायदे हैं. जो लोग आपके साथ आएंगे उनको आप इस्लाम सिखाएंगे, वैल्यू एडेड होगा उनके लिए, राइट. हम लोग इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो उनको जब वैल्यू मिलेगी तो ये फिर जाके आपको कैपिटल में कन्वर्ट होगा. इनिशियल एक छोटा एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. आप किसी भी टूर्स एंड ट्रैवल वाले से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, 10 से 14 लोग होंगे तो वो एक टिकट आपको फ्री मिलेगी, एक लॉजिंग होटल में जो है आपको फ्री स्पेस मिलेगा. तो ये उनका मार्जिन ऐसे सेट होता है. तो फिर बाकी जितना भी उन एक्सपेंसेस के बाद जो पैसा बचेगा वो पूरा पैसा वो अपने ऊपर खर्च करते हैं. लेकिन आप इसको थोड़ा और मटीरियलाइज करेंगे, पूरी सीरत लोगों को सिखाएंगे, उसमें उनको वैल्यू एडेड मिलेगा. जब तक लोग इस सीरत को नहीं समझेंगे, कुरान को सही से समझ नहीं पाएंगे. तो लोगों को आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इबादत के लिए लेके जा रहे हैं ना, तो एक यूनिक तरीके से लोगों को इबादत करने का एक तरीका सिखाइए. फिर वो जब वहाँ से वापस लौटेंगे तो उसके हक़ाक़ के साथ वापस आएँ, तो वो आपकी मार्केटिंग करना शुरू करेंगे. जब आप ये बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, हो सकता है कि ये जो आपका कस्टमर बेस है, ये लोग ही आपके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, राइट. इसको आप लार्ज स्केल पे लेके जाइए, लार्ज स्केल पे कर सकते हैं. अभी पिछले दिनों में जो बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है, तो उसमें एक फैक्टर कैलकुलेट किया गया, तो उसमें यही था कि जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले लोग थे, ऐसे लोगों को ले जाके उनकी फ़िक्र बनाते थे, उनका जहन बनाते थे, तो फिर जाके वो एक पॉजिटिव चेंज वहाँ पर आया है. तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि लोगों के जहन को तब्दील करने के लिए, उसके ज़रिए से उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू एडेड करने के लिए. दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी ओनली, राइट. मनी के साथ साथ आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं. तो देन एक आइडिया मैंने आपके सामने शेयर किया है, आप ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं. मतलब आपके लिए एक सवाल है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप ये हमारे सामने रखिए, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सोशल चेंज इज आल्सो अ बिग फील्ड, और उस पे फोकस करना इज बेनिफिशियल नॉट जस्ट मॉनेटरीली बट आल्सो इंशाल्लाह जो है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आप ला सकते हैं सोसाइटी पे व्हाइल मेकिंग मनी एंड व्हाइल हैविंग अ सक्सेसफुल बिजनेस. तो ये तो हलाल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंटेंशंस हो गया. बट वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स आई फील लाइक स्पेशली इंडिया में है और दूसरे कंट्रीज में भी है कि the halal aspect of the finances that is very difficult for a startup to मतलब to navigate किस तरह से हम investments ले सकते हैं and many other things, because the structure is made keeping interest as a revolving मतलब एक important factor है. तो वो उस पे जरा रोशनी डालिए. इसमें भी आपको काफ़ी स्टोरीज मिलेंगे. जनरली आई यूज टू राइट द स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल entrepreneurs, those who are on halal type of investment या halal type of doing business. कभी भी वो बैंक से लोन लाइन लिए हैं अपने पैसों पे या फिर अपनी मेहनत के नतीजे में वो किए. 2-3 स्टोरीज, मतलब 12 से 15 स्टोरी शायद मैं लिखा हूँ, आपको रेडियंस में, द कंपेनियन में मिल जाएंगी वो. एक चीज़ ये कि जैसे आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक मेरी पिछली बात को ही कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं.
अभी तारुफ में भी बताया गया कि इंडिया इस्लामिक एकेडमी देवबंद से, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की थी लॉकडाउन के टाइम में। लॉकडाउन में हर कोई यही कंसर्न में था कि रोज़ी रोटी का क्या होगा, जो पैसा दे रहे हैं गरीबों को मदद कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। ये एक मतलब पूरे कम्युनिटी में, पूरे समाज में एक ये डिस्कशन था। लेकिन जो मदारिस में पढ़ाने वाले लोग थे उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, वो भी एक बड़ा पहलू था। वो जब तक लोग देते रहेंगे वो लेंगे खाएंगे, उनको अपने पैरों पे ठहराना है, वो एक कंसर्न था हमारे लिए। तो वो कुछ देवबंद के उलमाए कराम से बात हुई तो उनको बोले कि इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। तो बोले कि क्या करेंगे? बोले कि आप एक इस्लामिक कोर्स डेवलप करके बनाइए। तो वो बोले कि इस्लामिक कोर्स तो अब कैसे बनाना है वो भी हमको आइडिया नहीं है, बिकॉज जो उनके पास करिकुलम होता है वही करिकुलम को लेके चलने वाले लोग होते हैं। उनको कुछ ख़ास उस तरीके के ट्रेनिंग या उस तरीके के कल्चर मदरसों में होता नहीं है। तो फिर उनके साथ बैठ के कुरानियात, सीरत, करंट अफेयर्स, कुछ फ़िक़्ह की चीज़ें, एक बेसिक 3 मंथ्स का एक मॉड्यूल बनाए। फिर उसको एक पोस्टर बना के लोगों के सामने शेयर किए कि आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। जस्ट फॉर 300 रुपीज़, आई थिंक वी हैव स्टार्टेड विथ 300 रुपीज़। तो 3 महीने का कोर्स 300 के लिए कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एनी एज, नो एज लिमिट, मतलब जो समझ सकते हैं इजीली, +2 के स्टूडेंट्स इस तरीके से, या फिर जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजीली इस्लाम सीखने का एक तरीका था, क्योंकि सबका बहुत अच्छा खासा टाइम था उस वक्त। तो इस तरीके से वो आइडिया जनरेट हुआ, लोग उस पर आना शुरू किए। तो फिर वो 3 महीने के बाद लोग बोले कि इससे आगे भी हमको कुछ सीखना है। 6 मंथ्स का कोर्स डेवलप किए। फिर 6 मंथ्स के बाद बोले कि कुछ और हमको सीखना है, 1 ईयर का कोर्स डेवलप किए। फिर अभी जो मदारिस में 5 साल में आलिमियत मुकम्मिल करते हैं लोग, मतलब जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको कट शॉर्ट किए। अल जामिया इस्लामिया केरला में एक यूनिवर्सिटी है, फिर देवबंद के कुछ उलमा के साथ जो मलेशिया में पढ़ के आए हैं उनके साथ बातचीत की। तो फिर हमने 2.5 ईयर्स का एक आलिमा और आलिमियत का एक कोर्स डेवलप किया। तो आप 2.5 साल में मुकम्मिल आलिम बन सकते हैं। आप जॉब करते हुए भी इसको करेंगे तो आप बन सकते हैं। यू विल लर्न द थिंग्स, मतलब इस्लाम क्या है वो सीख सकते हैं। ये किसके लिए? ऑल द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो वो जो लोग जहाँ से बैठे हुए हैं वहाँ से वो करेंगे। वो फिर धीरे धीरे चलते 7 to 8 कोर्सेस अभी हमारे पास है। ऑल्टरनेट रिलीजन की स्टडी हो, कंपैरेटिव स्टडीज़ पे होगा, फिर हिंदुत्व पे एक कोर्स है। इस तरीके के अलग अलग मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं, वो लोगों के दरमियान में पुश कर रहे हैं। तो आई थिंक 18 आर द टीचर्स दोज हु आर टीचिंग, मतलब 18 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और पूरा सस्टेनेबल है। छोटे से शुरू किए, धीरे धीरे उसका बढ़ाए, सब लोग उससे एंगेज होना शुरू हो गए। अगर मैं वीडियो पे आके बात करता, लोगों को इस्लाम की तालीम देता, तो शायद उम्मत में एक बड़ी कम्युनिटी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर वही टोपी मौलाना दाढ़ी वाले बैठ के पढ़ाएंगे तो लोग इजीली उनको एक्सेप्ट करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। दैट वाज एन स्ट्रैटेजी कि उनको एंगेज किए। फिर नाम में भी ऐसे ही रखे, देवबंद बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये वाकई में सही दीन सिखाने वाले लोग होंगे। उम्मत का एक बड़ा तबका इसको एक्सेप्ट करता है। तो उनकी बिजनेस में यही होता है ना, जो लोगों को चाहिए वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मुझे जो चाहिए वो मैं करने की कोशिश करूंगा तो फायदा नहीं होगा उसमें, राइट। तो दिस टाइप ऑफ वे वी हैव मूव फॉरवर्ड एंड वी आर सक्सेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमको कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमारा कभी कभी लगता है, लेकिन उम्मत को इससे फायदा होगा, कम्युनिटी को वैल्यू मिलेगी, जो इससे कनेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनको फायदा होगा। दिस वाज द इंटेंशन एक्चुअली। जी Meraj bhai, previously you were talking about किस तरह से it is not necessary that you depend on investors, because you have to build a business that is self-reliant in a way, or all the other things. So आपसे मतलब एक क्वेश्चन ये था कि how important is it to invest in yourself initially? Invest time before you just jump into it. Invest some time. Build yourself और अपने आप पे किस तरह से काम करना जरूरी है। And then secondly, I also want to know what are the startups you have had so far? I mean, I'm sure you have had so many. Kuch examples where it has been very effective and successful, and also some of those that did not work out. You thought it would work out, but then something did not work out. So what were the reasons and उस तरह से? If I start talking about the startups that did not work out, we'll need a 3-day session. But the first point of yours, how important is it to invest on yourself?
ऑफ कोर्स सुपर इम्पोर्टेंट। अगर आप खुद पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आखिर क्या करेंगे, राइट? And the whole aspect of investing on yourself has two sides to it. One है, the tangible and the technical aspects of it, the skill development part, learning more about the business that you want to get into, the technicalities of it, the non-technicalities of it, so on and so forth. And the second aspect is the intangible part, right? Cleaning up yourself. That is super important, right? And when I say cleaning up yourself, and this is a problem with everybody, right? Anybody who's trying business and entrepreneurship, सबसे पहला question या फिर the whole motivation of starting a business is to make a lot of money, right? ये fundamentally wrong है. You should not start a business, or you should not pursue entrepreneurship. You should not do a startup just because you want to make a lot of money. That's wrong reason to do the right thing, and it will never happen. So इसके लिए सबसे पहली चीज़ है अपनी नीयत को साफ करना, राइट? जब तक आपकी इंटेंट, आपकी नीयत वो पैसे से नहीं हटेंगी, आपका काम नहीं होने वाला है. ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है. फील फ्री टू डिसएग्री एंड डिस्कार्ड माय ओपिनियन. You are under no obligation to listen to me and follow what I say. But this is my personal experience of what I did for the past 15 years. पहले के मेरे 5-6 साल I focused only on making money, and those were the years that where I never made any money, right? And उसके बाद में when I actually fell in love with the whole process of building something, giving it to people, and watching them enjoy and ease their lives with things that I created, I started enjoying that whole process, right? And that led to so many different things happening without me even thinking about it, right? And ये जो गैब से होते हैं ना चीज़ें, ऐसा होते हैं. तो मेरा again, like I said, coming back to the whole thing, सबसे पहली चीज़ है intangibles में clearing up and cleaning your intent. लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की के नीयत से जब आप करेंगे तो you will automatically open doors that you have not even thought of before. पहली चीज़. दूसरी चीज़, देने की नीयत करना, राइट? और ये बात मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, बहुत बार. जब आप देने की नीयत करते, इवन व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, राइट? एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि भाई मेरे खुद के पास नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, राइट? यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैसे देना है या फिर आपके पास जो है वो देना है. आपके पास एक्चुअली आपके पास जो है वही देना है आपको, इवन इफ इट्स अ स्माइल. Even if it's your company for 15 minutes, whoever needs it at that point in time. But when you get into that habit of asking people, what can I do for you, genuinely, saaf niyat se, you will bump into problem statements that will open up $1 billion markets for yourself, right? And I don't have science to back up this claim of mine, but you know how it works, right? Automatically आपके काम में बरकत आया, right? Automatically, whatever you do, you will have the supreme power to make it happen if you have the right intent and you're doing it to help others, right? क्योंकि जो सबको दे रहा है उन्हें आपको भी देता भाई, right? और वहीं से आने वाला है. Sources, there is only singular source for everybody. और किसी को मिल रहा और किसी को नहीं मिल रहा, तो मतलब there is some foundational problem somewhere, right? And my personal belief is all forms of entrepreneurship is social entrepreneurship. Even if it's 100% hardcore for profit, right? Usually आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया, social entrepreneurship, organizing or structuring your organizations for a Section 8 company, not for profits, because it will save you taxes. ठीक है, it will save you taxes, that's a different thing. But if you're doing it only for that sake, it will not happen. पहली चीज़. दूसरी चीज़, when you do a startup and it performs well, you're creating jobs, right? You are helping put food on the table of families, right? You are helping improve the quality of life. You are helping improve the societal happiness index. There are so many things that happen automatically when your startup does well, when you make money, right? When you make money, you start spending that money on other people and on other things, right? That's how economy grows, right? Automatically you start paying more taxes, and of course when you start paying zakat, automatically it all comes back to you.
तो बोलने का मतलब और मकसद ये है कि जस्ट बिकॉज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आपके थोड़े पैसे बच जाते हैं बाय द मीन्स ऑफ टैक्स एंड दिस एंड दैट, डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन. ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मेरे हिसाब से, right? I've also got on a lot of backlash from a lot of people saying ऐसा नहीं वैसा नहीं. खैर वो बहुत longer discussion है, but yeah, this is what I firmly believe how it is. Coming to my projects, so my very first startup that I did in college was an algorithm that automatically traded forex. It made me a lot of money, and then one of our clients again from Australia, they loved it, so they paid me a bomb, which was a lot of money back then for a 22-year-old, 20 to 23, and which is what I said, वो पैसे कहाँ गए कब गए कैसा गए मालूम ही नहीं होगा. After that, I built this platform called Money Messenger. It was a socially collaborative trading platform, something on the lines of Robinhood या Zerodha अगर आप देखें. This is back in 2013. In fact, we were India's one of the top 25 startups listed by Bloomberg. In fact, I was on so Shark Tank se pehle there used to be something called the pitch, right? Similar format, but by Bloomberg, it was called the pitch. So in fact, Money Messenger was selected there. We raised institutional funding from TIE Hyderabad and Hyderabad Angels. It did not work out, so that's a failure. After that, I built the hacking school, which was India's first coding bootcamp. This is September of 2013, which again, became my claim to fame. And Alhamdulillah, for the past 11 years, we have had thousands of students coming from more than 21 countries to India, and they went through our program, found jobs, did better, and progressed in their lives. So that's a very fulfilling part of my life / career. In fact, it's still on, alhamdulillah, and I hope it continues to grow, because I've seen in fact people, they come to me and they say how the hacking school changed their lives. So, and no amount of money can give that thing. In fact, I'm having goosebumps right now as I speak, because when you change someone's life, they can't forget you. And that's why I say मेरे साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, तो it works out that way. उसके बाद में I did Trillion Co-working. I wanted to create a space for people with ideas, जहाँ पे people wouldn't judge anybody for whatever they are working on. It was doing well until COVID, when everything shut down and we had to shut that business. I still believe it could be a big thing, but it came back in the form of Adventure Park, which became again India's first idea state startup incubator for students, non-academic. And this, I think, is this will top in my list of all the startups that I ever did, which is we've incubated more than 278 startups with 600 plus founders from tier 2 and tier 3, and that is what I'm personally proud of. Why? Because I reached out to a lot of colleges with this idea in 2018 and 2019. Every college rejected this idea, saying okay, you are an idiot, students should not be working on startups, they should be focusing on their academics and getting placed, right? They did not believe in them, and they told me, and I quote them कि entrepreneurship सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बड़े कॉलेज के लिए है, IITs, IIMs and BETs के लिए. तो वो बात मेरे को काफ़ी गुस्सा आया, and I said कि अगर आपको नहीं करना है तो I'll find someone. And that's when I bumped into Latif Khan sir, MS Education Academy. That was the first time I was meeting him, and 3 minutes of the meeting and he just got started with that. He said, let's do it, right? And that's what I'm talking, right? वहाँ पे intent, niyat, or the whole motivation of just doing something good for the greater good of the society. So that's how it happened. And then the last product that I tried was maths.ai. It was an AI powered tutor. So I was in US in 2023. I go to US for a couple of months every year. My bhanja told me he hates math like I do. And he said, when I asked him, why didn't you ask this question to your teacher? He said, my friends laugh at me, right? And then my teacher gets fed up because she has to explain it, 2 times or 3 times. And this was a time when OpenAI had just opened up. Beta launch हुआ था, पहले US में हुआ था, और उसके काफ़ी देर के बाद इंडिया में आया था.
So that's when I bumped into this problem statement. Then I realized I have a domain name Maths.ai, and I said, what if AI could teach him, right? Quickly, built a prototype and gave it to him. I did not tell it was mine, and I told him, you can now ask this thing whatever you want any number of times. And that was the moment, right? He really loved it, and that actually eventually improved his grades and all of that, and made him fall in love with the subject, right? And then in less than 12 months we got about 15,000 users using Maths.ai. अभी वो मेरा focus नहीं है. I don't even know how many users we have, but it's a product, and again it has touched a lot of lives with the power of AI. So, now that we are delving into the topic of entrepreneurship for social change, Azhar bhai, आपसे एक सवाल था कि many of us here are SIO members or at least affiliated to Students Islamic Organization, and हमारा जो main motivation है, it is to bring about a change in society for the better. So keeping that in mind, अगर हम we want to take up entrepreneurship for social change, क्या schemes है from the government और इवन जैसा रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम अप्रोच हो सकते हैं टेकिंग आवर आइडियाज? मतलब आइडिया रह सकता, बट व्हाट इज द प्रोसेस, और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं? कैन पुट सम लाइट ऑन दैट। जहाँ तक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या बिल्कुल अपने कैडर की अगर हम बात करते हैं, तो इंक्यू हैब जो फॉर्म किए थे 2019 में, उसके पीछे आइडिया यही था, उसके जहन वो बैकग्राउंड में यही आइडिया था कि हमारे नौजवान जो यूथ, मुस्लिम यूथ है स्पेशली, स्टूडेंट्स एंड यूथ, सम में हैव आइडियाज़, राइट? किसी के पास पैसा होगा लेकिन उनको क्या करना है मालूम नहीं, और किसी के पास पैसा भी होगा, आइडिया भी होगा, बट दे डोंट नो हाउ टू डू। तो ये सब लोगों को एक जगह कनेक्ट करना, कोलैबोरेट करना, ये बेसिक आइडिया था उसमें, कि जो आइडिया लेकर आएंगे उनको फंड भी चाहिए होगा या उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो देन वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट दोज हु हैव पास्ड फ्रॉम SIO एंड डूइंग वेल बिजनेस इन सोसाइटी। तो वैसे कुछ लोगों का पूल हमने बनाया। देयर आर अराउंड एट दैट टाइम 8 to 12 businessmen, they are doing some good number of businesses in the society। फिर कुछ इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड लोग थे। अक्सर जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, हम किसको अपील करते हैं? यहाँ पूछेंगे तो बोलेंगे जो गल्फ़ में हैं या NRIs है, उनके पास जाएंगे, उनको इन्वेस्टमेंट पूछेंगे। वो जॉब करने वाले लोग हैं, राइट? आपका बिजनेस समझ में ही नहीं आएगा उनको, और 31st होते ही अकाउंट में कितना आया है, इतने इन्वेस्टमेंट का पूछेंगे फिर आपको। तो डोंट अप्रोच इन दैट वे, राइट? तो फिर हमने ये किया कि जो ऑलरेडी बिजनेस में वेल टू डू सेट ऑफ लोग हैं, हम उनको बोलेंगे कि यू डू एक्सपेरिमेंट्स। अभी शायद मेराज भाई और अच्छे से बताएंगे व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ स्टार्टअप्स, लेकिन एटलीस्ट वी नीड टू प्रोवाइड सम एनवायरनमेंट, लेट देम डू समथिंग, दे डू सम एक्सपेरिमेंट्स, राइट? तो वो एक जहन था। तो फिर हमने ये कोशिश किया कि अब इनको सिखाएंगे तो कहाँ सिखाएंगे? इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, राइट? अगर आप यूरोप जाएंगे, मैं अभी लास्ट मंथ केनिया में था, तो वहाँ के टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई, बहुत देर गुफ्तगू हुई। वो बार बार अपनी गुफ्तगू में बोल रहे थे हमारे पास 5 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारे पास 3 बार बोल दिया। तो मैं बहुत मोहब्बत से उनको बोला कि मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ, हैदराबाद, यहाँ हैदराबादी बिरयानी बोला, ठीक है। तो वो स्टेट में 5 करोड़ के आसपास में पॉपुलेशन है, ऐसे 29 स्टेट्स हमारी कंट्री में, राइट? सो द वे पीपल लुक द पॉपुलेशन इज डिफरेंट वे, राइट? तो इतने बड़े इंडिया में हम कहाँ इंक्यूबेशन सेंटर डालेंगे? आप जिधर भी डालेंगे वो वहाँ के लोगों को कैटर करने के लिए बस हो जाएगा। तो देन वी हैव थिंकिंग ऑन हाउ वी शुड डू। पहले तो वर्चुअली ऐसे अनाउंस कर दिए, फिर जो बिजनेसमैन थे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उन बिजनेसमैन को हमने कहा कि जो भी अगर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे, उनको इंक्यूबेशन सेंटर की ज़रूरत है या दे वांट टू लर्न समथिंग, आप अपने बिजनेस में उनको स्पेस प्रोवाइड करिए। दे ऑल एग्रीड। उसकी एक मीटिंग थी मार्च 28, 2020 में, लेकिन उससे एक हफ्ता पहले लॉकडाउन आया, एट दैट आइडिया वाज कम्प्लीटली स्टॉप्ड। मतलब फिर उसके बाद हम कुछ कर नहीं सके।
अगेन वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग फ्रॉम अक्टूबर 2024. अभी गोवा में सीहत कैनिंग कंपनी है. टिल डेट फ्रॉम 6 months 3 people केम एंड दे लर्न समथिंग देयर. दे डिड सम एक्सपेरिमेंट्स. उनको कुछ ट्रेनिंग दिए मार्केटिंग कैसे करना है, एकदम कंप्लीटली प्रैक्टिकल. अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहे उनको कैसे होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट होता है बड़ी कंपनीज में, तो वो उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, पूरी चीज़ें करेंगे. कंप्लीटली लर्निंग बाय डूइंग. जैसे अभी मेराज भाई ने भी कहा, मेरा भी वही कंसर्न था पहले से कि आपको जो डिग्रीज से हासिल होता है वो कंप्लीटली आउटडेटेड सिलेबस अभी हमारे पास मौजूद है. एमबीए में ले लीजिए, इंजीनियरिंग में ले लीजिए, जितने भी चीज़ें हैं सोशलाइजेशन के लिए, एक एंगेजमेंट के लिए, दैट इज़ ओके. बट वो पढ़ाई पढ़ने के बाद आप कुछ करेंगे समाज में आके, दैट इज़ वेरी लीस्ट पॉसिबल. और जो बनिया कम्युनिटी है स्पेशली, व्हाट दे विल डू, उनके बच्चों को अपने कॉम्पिटिटर के पास काम पे भेजते हैं. ही विल गो एंड लर्न द थिंग्स. बिजनेस कैसे करना है वो सीखेगा, और वहाँ पे जो कस्टमर्स है उनको भी वापस में लेके आएगा 2-3 साल बाद. वो आइडिया से आप मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए. हमेशा यही एंगल से सोचना ज़रूरी नहीं है, राइट. हम कोई किसी को इनजस्टिस करना, किसी का हक मारना, ये हमारा मकसद नहीं है. जस्ट टू लर्न द थिंग्स. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे, अभी मैं अक्सर जो भी पूछते हैं कि करना क्या है, ये बिजनेस में मेरा आइडिया है, बोले कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमको कुछ करना है, तो आप कपड़े कैसा खरीदते, उनको पूछिए आप, तो बोलेंगे कभी अब्बू लाएंगे, कभी चाचा दिलाएंगे, कभी वो होंगे, कभी दोस्तों के साथ जाके लेंगे. उनको ही नहीं मालूम कि कपड़ा कैसे सेलेक्ट करना है. तो हाउ ही विल डू द बिजनेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो लेट हिम वर्क इन एनी शॉप, रिटेल शॉप या किसी में भी वो काम करें. लेट हिम गेन द एक्सपीरियंस, देन गो टू द मार्केट, देन स्टार्ट समथिंग. तो पहले आप कुछ करने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, देन प्रैक्टिकली समाज में आइए. तो आपके पास एक, जब आप बात करेंगे आपके पास एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वट एवर यू स्पीक यू शुड नो व्हाट यू आर स्पीकिंग. ऐसा नहीं कि हम कहीं से पढ़ लिए, कोई मेमे आ गया यहाँ से वो देख लिया और उसी को सही समझ के चल रहे. तो व्हाट्सअप के बाद मेमे इंडस्ट्री भी बड़ी है, ऐसे ही चीज़ों को फैलाते हैं, हम उसी को सही समझते हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू लर्न, वी नीड टू आइडेंटिफाई. इसके बाद आप प्रैक्टिकली चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा. जैसे इंक्यूबेशन का एक मैं आपको आइडिया दिया हूँ कैसे करना है. आप में से अगर कोई भी आना चाह रहे तो आइए. नॉट ओनली इन गोवा, कुछ और कंपनीज के लोग भी, दे आर रेडी टू एंगेज, दे आर रेडी टू हेल्प यू. उनके पास जाइए, उनके पास रहिए, उनके पास सीखिए. तो थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा. एंड वन मोर थिंग इज़, जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे. आप उसी दायरे में, उसी माहौल में, वहीं से सब यहीं चाहिए अगर सोचेंगे तो मुश्किल है. दुनिया बहुत बड़ी है, आपको एक्सप्लोर करना है. आप ट्रैवल करिए, घूमिए फिरिए, चीज़ों को देखिए, लोगों से मिलिए. हर दिन एक नया आपको एडवेंचर करने को मौका मिलेगा. हर दिन आप एक नई चीज़ सीखने को मौका मिलेगा. सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डू. ये कोई नहीं बोलेगा आपको, कोई क्लास में ये चीज़ नहीं बोलेंगे आपको, ये पढ़िए इतने मार्क्स आएंगे, ऐसा करिए, ये सब बोलेंगे. लेकिन आप प्रैक्टिकली करने से ये होगा, कोई आपको नहीं बताएगा. दिस डज नॉट मीन कि हम कुछ पढ़े नहीं हैं, करे नहीं हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट आई हैव स्टडीड. इंजीनियरिंग किया, मास्टर्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर एमएससी साइकोलॉजी किए, फिर एमए इंग्लिश किए, अभी जॉब क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं. कंप्लीटली जो पढ़े हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है उसको, लेकिन एवरीथिंग वी आर यूजिंग. वो जो सोशलाइजेशन था, लोगों से एंगेजमेंट था, वो तमाम चीज़ें हमको फ़ायदा होती है. ऐसा नहीं कि कंप्लीटली उसको रद्दी में फेंकना है, कुछ हद तक वो फ़ायदा होगा, बट नॉट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकली आपको चीज़ें सीखना है तो यू शुड कम इन टू द सोसाइटी प्रैक्टिकली. Meraj, now that we're talking about the incubators, I feel like alhamdulillah से I think हर एक का कुछ ना कुछ आइडिया है and everyone wants to somehow implement it, and now they want to get started because अगर आइडिया नहीं भी है तो this workshop might have motivated them to get started, to stand up and do something. I feel like incubator is a place to start, and at least मेरी journey वैसी है. And second thing is also grants. Grants play a big role. आपको अच्छा खासा fund without a lot of commitment मिल जाता. तो can you shed light on government के schemes क्या है now that you're the CEO of Innovation Cell? तो
government schemes क्या हैं, what are incubators, what are some of the good places in Hyderabad, क्योंकि I think most of the people here are either from Hyderabad or Telangana. So incubation cells and what are different grants, how to apply, what is the process to get into. Incubators are absolutely very important. I mean, you should know from, I mean, I started Adventure Park. How many of you know Adventure Park? Okay, mashallah. Thank you. So I'm obviously biased and I would say, incubators are really important. But long before Adventure Park, 2017, I did a project with Pista House, iftarparty.com. के नाम से. That project was incubated at Arbab Hotel, Toli Choki. How many of you know Arbab Hotel? Yes, very good. तो चौरस्ते पे है, राइट? तो मैं और मेरे दोस्त साथ हम दोनों जाके वहाँ पे बैठते थे क्योंकि हमारे को काम करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिलती थी. तो हम लोग जाके एक कोने का टेबल था, वहाँ पे एक वेटर थे, बेचारे बहुत अच्छे थे, वो टेबल रखते थे हमारे वास्ते. हम लोग दोपहर में जाके लिटरली ईशा की नमाज के बाद उठते थे वहाँ से, राइट? सो बेसिकली iftarparty.com वाज इंक्यूबेटेड देयर, राइट? लैपटॉप ले लेके चले जाते थे, मोबाइल इंटरनेट से काम करते थे, खाते थे, पीते थे, काम करते थे और काम होता था. Moral of the story here is, अगर आपको करना है तो you will find a place, right? And if you're not finding a place, then trust me, you have to sort your priorities out. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि you want to do something and you can't find support या resources. हो ही नहीं सकता. I can't believe that. If you're not finding it, it only means you haven't wanted it badly enough, right? And that was 2017. And उसके बाद में incubators है. अब तो हर college के पास एक incubator रहना ज़रूरी है by AICTE norms, so on and so forth. I joined Telangana Innovation Cell about 7 months ago, and I'm bringing a few policies that will make starting up in college not just easy but almost mandatory, right? Because I very strongly believe के, और मेरे को मालूम है, how many of you are in college? वाओ, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी. और मेरे को मालूम है कि कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती. एग्जाम से कितने दिन पहले या कितने रातें पहले हमारी तैयारी होती और कैसा होती. आई हैव बीन एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. इनफैक्ट आई एम राइट नाउ परसुइंग LLB. तो आई नो हाउ इट्स डन. सो प्लीज डोंट टेल मी कि यू कांट फाइंड टाइम टू डू समथिंग एल्स. And this is exactly why I very strongly believe that college is the best place and the best time for anybody to try out any of your ideas. आपको एक ready-made community मिलती, ready-made set of mentors मिलते, ready-made resources मिलते. कोई चीज़ की कमी नहीं रहती आपको जब आप कॉलेज में कोई आइडिया आपका ट्राई करना चाह रहे, राइट? लेट्स से आपके कॉलेज में आप ट्राई कर लिया और आपका कॉलेज खत्म हो गया एंड यू वांट टू कंटिन्यू टू ट्राई, एंड देन कम्स देयर आर सो मेनी incubators. Telangana में there are about 80 plus incubators, right? And each incubator has its own focus area. So if you have a hardware product or project in mind, you can reach out to incubators like the ITIC incubator in IIT Hyderabad, या FAPSI incubator in IIT Hyderabad. If you want to work on something deep tech, you can go to IITCI incubator. If you want to work on again precision wale hardware prototypes, you can reach out to T-Works. There are so many. If you have a life sciences का idea, you can reach out to RICH, which is Research and Innovation Circle of Hyderabad. अगर आपका agri-tech में idea है तो A-idea नाम, या फिर ICRISAT, या फिर CSIR रीच आउट कर सकते हैं. आपका अगर अगेन फार्मास्यूटिकल में है, लाइफ साइंसेस में है, हेल्थ केयर में है, तो यू कैन रीच आउट टू CCMB. Moral of the story here is there are tons of resources available out there right now as we speak. What do you want to do with them is the question, right? It's like having a watch on your hand. लेकिन अगर टाइम देखने नहीं आया तो फायदा क्या है उसका, राइट? है घड़ी, लेकिन टाइम देखने आ रहा नहीं, राइट? और टाइम देखने आ गया अभी तो वो टाइम पे करना क्या है नहीं मालूम है, तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ having a watch or you spending a bomb to actually get that watch, right? So this is how it works. And then there are a lot of grants. If I were to name a few on top of my mind, the Startup India Seed Fund, which the central government under Startup India scheme awards to all the incubators. Each incubator is given about 1 to 5 crore rupees that the incubator would spend on the startups depending on their focus areas, right? And that money is available.
Last year, about 3,700 startups benefited from this scheme, right? And for hardware prototyping ideas, there is Nidhi Prayas, where again you get about a 10 lakh rupee grant to prototype your product. In fact, they would also give you, I think, a stipend for you to pursue this, right? तो ऐसे कई सारे grants हैं, कई सारे policies हैं, कई सारे schemes हैं, जहाँ पे you basically have to ask for it, right? And it's there, right? And this is also where incubation centers like my own, I mean, Adventure Park was meant to be that. But more important than the schemes, the money, all of this, I very strongly believe, again, ये मेरा personal experience है, you need a community of believers, right? Set of people who believe in you के हाँ भाई तुम कर सकते. क्योंकि slightly, again, I'm part of the same community, I'm part of the same society, so I'm also blaming myself, so please personally mat lijiye. We are part of the problem, right? We live between people who don't believe that we can do it, right? You take an idea to your friend या फिर your neighbor या कोई भी बड़े हजरत इन मस्जिद में क्या करते यार, नहीं होता है, उन्होंने करके ट्राई कर लिए थे, उनसे नहीं हुआ तो तुम्हारे से कैसा होगा, right? We need to move ahead from this ideology, from this thought process, and we need to focus on things that we can do, not focus on things that we can't do. We need to focus on things that we have and not crib and cry about अरे ये मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता. आज के डेट में तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते. We have everything now, what we need to do what you should be doing at this point in time. There is a word called risk in Arabic, right? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? Sustenance, right? So no, no risk, right? No risk, and KNOW, no risk. One advice that I would give to my younger self would be don't listen to people. They don't know what they're talking about. Don't take people too seriously, or even yourself too seriously. Usually, we get into this mindset, I know it all, he know it all, she knows it all, उन्होंने जो बोले वो करना है, मेरे को जैसे समझ में आ रहा वैसा करना है, and कोई कुछ बोल दिया बुरा लग गया. Stop taking yourself too seriously. The minute you stop taking yourself too seriously, you open up yourself to a lot of positive things in life, right? Energies, I believe in energies, right? When you have positive vibe, positive energy, you attract positive vibe and positive energy wale log, opportunities, ideas, and all of that happens, right? So don't stress too much on things not happening. Don't stress too much on and one last point, we again, I want to ensure myself, but we compare ourselves with everybody, right? Our success depends on the success of our cousins, our neighbors. How successful we are depends on how successful our cousins think about us, right? So we live a life that's all about pleasing everybody but us, right? Don't do that. Eventually, when you're on your deathbed, and all of us believe that we will die, right? Yes? Anybody here who is forever? No, right? So when you're on your deathbed, you will only have a long list of regrets. Okay, आप खाला को, खालू को, बाजू वालों को, इनको उनको खुश करने में लगा दिए, and eventually वो चक्कर में you did not do what you wanted to do. You did not do what you believed in, what you wanted to do. So don't do that, right? And I really wish I knew these things, earlier in my life, but I did not. And like I said, I come from the same society, so I lived that life for a really long time. But now I don't care, right? Which is when I opened up and I started building, fearlessly. And that is when you put your best foot forward. I think if there are not any more questions, we can end on this note. Yeah. Our relatives who are young, who are still studying in school,
In last month Ramzan, I have a chance to visit Bhatkal. There is a one small NGO. What they are doing every year in summer vacation is they have one small wing of children. जैसे हमारे पास चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन JSE इस तरीके से दे आर डूइंग सम एक्टिविटीज फॉर देम. सो एवरी समर व्हाट दे विल डू इज लिटिल ट्रेडर्स एक एक्टिविटी वो कराते हैं उनसे लिटिल ट्रेडर्स. सो जो स्ट्रीट में एक लड़का होगा तो उनके घर के सामने उनको एक छोटी दुकान लगा के देंगे, राइट. वैसे एक 10-15 लोगों को एक महल्ले में, बच्चों को छोटे बिल्कुल 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, एक 1000-1500 का कुछ सामान उनको दिला देंगे. वो बोलेंगे कि आप इसको सेल करके आपको इससे पैसा बनाना है. वो फेल होगा, लॉस करेगा, कुछ भी होगा, ही नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन लेटर. सो इससे उनकी जो माइंड की एक्सरसाइज होती है ना, क्या क्या चीज़ें सीखेगा, वो कम्युनिकेशन उसका बढ़ जाएगा. ही नोट टू कैलकुलेट द थिंग्स, वो मैथ्स में परफेक्ट हो जाएगा. प्रैक्टिकली उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये दैट इज़ वन एक्टिविटी. हमेशा सब बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं ऐसा, जो इसमें इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए. तो जो हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर या बड़े बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, तो अभी से उनको अपने साथ बिजनेस में एंगेज करने की कोशिश करिए. उनको साथ में ले जाइए, उनको चीज़ें बताइए, उनको सिखाइए. आई एक्सपीरियंस्ड वन थिंग इन सऊदी अरेबिया. वहाँ पे बच्चे जब शॉपिंग मॉल जाते हैं ना, अगर वो गूंगा भी होगा तो वो सब काम कर सकता है. ऐसे he will go, he will pick the things, he will put in the basket. वो आएगा काउंटर पे देगा, उसको बिल मिलेगी, पैसा देगा, चले जाएगा. इंडिया में कैसे होता है? इंडिया में अगर आप मार्केट जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, नॉट इन सुपर मॉल्स, जनरल आप मार्केट चले जाएंगे, तो द पीपल विल स्टार्ट बार्गेनिंग, दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद द पीपल. वो अच्छी बात करेंगे, उसको कम कराने की कोशिश करेंगे, या सामने वाला उसको प्लीज करेगा. तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये इससे बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं हमारे साथ. हम मार्केट जाते वक्त बोलते कि गंदा रहता, बच्चे नहीं आना है साथ में, नहीं, लेके जाइए उनको वहाँ पे. दे नीड टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स. तो जब तक वो एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं. सो हमेशा उनको अपने साथ रखिए, जैसे आप उनको बनाना चाहते हैं वैसा उनको एंगेज करने की कोशिश करिए. So I agree to the second part, which is the exposure is really important. I agree that education system does not, work towards the common goal what we have, and we definitely don't want to make them employees. That's one aspect, but we blame a little too much to the education system. It's also not stopping us from doing what we want to do, right? 4 बजे जब आप स्कूल से वापस आ गए, उसके बाद में it's in your hands what you want to make them do. So exposure is really important. I would suggest you expose your kids to almost all aspects of the society as much as you can, right? When I say all aspects, not just engineering, not just medicine, but all aspects, right? It could be give him the chance to try photography, give him a try to try psychology, give him a chance to try taxation, talk to them about politics, talk to them about science, talk to them about how space works and stuff like that. So exposure is really important, and maybe have a structured way to expose them to all aspects of universe, how things work and stuff like that. First thing. Second thing, make them fall in love with building, right? Train them to build something, make them creators, right? हमारी सबसे बड़ी weakness आज ये है कि we are not creators, we are consumers. What that means is we are dependent on people who are creating, and they are basically controlling that whole cycle, right? They dictate what we should buy, and that's a very that makes us weak, right? So make them fall in love with the whole process of building, right? Not the outcome of it, right? If you make them fall in love with the outcome of it, then they won't care about the process. They will try to find shortcuts. Third, and I very respectfully disagree with Bhai, do not expose your kids to the money making aspects in school, please, right? उससे उनके दिमाग में the love of money, दिमाग और दिल में पैसों के लिए मोहब्बत जाग जाती. When they understand the power of money, and that's not an age where they can differentiate between right and wrong, right? When they know कि हाँ पैसा कमाना important है या ज़रूरी है, अगर ये बात उनके दिल में आ गई तो then बहुत मुश्किल हो जाता to help us train them कि
making money, while money is important, not more important than your morals and stuff like that. You should do that only once they are उनके अंदर शऊर आ जाता और उनके अंदर थोड़ी बहुत समझ आ जाती सही और गलत की, then we can talk about that, and that usually happens when once they enter a professional college या graduation में जब enter करते हैं आप, तब expose them to the concept of business, right? But until then, I think I'm a very hardcore believer of exposing them to only the process of building. Teach them how to prototype, 3D printing सिखाइए, teach them how to code, teach them how to design, right? Eventually, I very strongly believe, I know I'm digressing and maybe we are extending this a bit, but we live in the age of AI, right? Coders now do their job 10x better and faster, right? With AI, writing, designing, everything. So eventually we will be at a time jahan pe all of us will be on the same page. All the creators, all the builders will be on the same page, where we won't have any solid differentiator between products, because the source of generation ya creation is going to be more or less same, right? Similar foundational LLMs will create whatever we want to create, which is where I think designers are going to play the most critical role in creating product characterizations that are going to stand out and make your product successful, right? To make them fall in love with the whole process of design. Design is the most difficult thing that anybody can do, mere hisab se, right? And that is what I think we must engage our kids into. To get out there, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप लोग अपने suggestions दे रहे थे. उसके अलावा भी stop taking yourself seriously. Get down there, go do something. और ये जो no risk is again this बहुत important point है. We take them inshallah and we will try to get this in our lives, and we really hope that this has gotten a big change in our lives. And jazakallah khair for our distinguished guests. आप लोग अपने busy schedule में से आए और हमको motivate करने का काम किया. jazakallah. Thank you so much.